Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 18th lecture of this series of Indian Evidence Act. In this lecture, we would start with section 60, that is exclusion of hearsay evidence. Exclusion of hearsay evidences. Section 60 is about oral evidence, and it says that the oral evidence should be direct. Now, what do you mean by the oral evidence? When a witness appears into the court and gives its testimony into the court regarding about a fact, regarding a particular fact, जो फैक्ट उसने देखा है या सुना है उसके लिए वो टेस्टिमनी दे रहा है, मीन्स एविडेंस दे रहा है ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्ट. And now the rule is that the oral evidence should be direct. Now what do you mean by the statement that oral evidence should be direct? It means the person who directly heard or persuaded with his senses, he only directly give the evidences or testimony. फॉर एग्जाम्पल मान लो ए ने बी को शूट किया, गोली मारी, एंड एट द टाइम ऑफ शूटिंग सी वॉज प्रेजेंट एंड सी सो दैट ए शॉट अपॉन बी. अब इन द कोर्ट द फैक्ट इज हु शॉट अपॉन बी, and regarding that fact C appears into the court and gives his testimony that A shot upon B. Then is it admissible? And since it is a direct evidence means since it is A who shoots B and it is directly seen by the C himself so that A shoots upon B. And therefore here the evidence is given directly by the C and the evidence is direct, therefore it is admissible. अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं. सपोज A shot upon B and C saw it, and later on C told to D. C told to D that today I saw A shooting B. अब suppose in the court D appears and gives the testimony that A has shot upon B. अब यहाँ पर ध्यान देना, D appears into the court and gives testimony of the fact that A shot upon the B. Now, is this a direct evidence? The answer is no. Why? Because D himself did not see the shooting to B by A. The person D heard it by C. Means it is heard by some third person. And therefore, what is D stating before the court is not something which is directly seen by him from his eyes, and therefore it is an indirect evidence, and it would be better that C should be called into the court and C should have given the testimony. So this testimony by D is called the indirect evidence, and indirect evidence is not permissible in the court. Let's see the section 60. Oral evidences must in all cases, whatever be direct. Oral evidence must in all cases, whatever be direct. Whatever means what? Be it the civil case, be it the criminal case, whatever kind of a case, oral evidence has to be direct. That is to say, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. मतलब अगर मैं बयान दे रहा हूँ किसी ऐसी बात पर जिसको देखा जा सकता है, तो उसको अगर मैंने खुद देखा है तभी मेरा बयान देना अलाउड होगा. I must tell the court that I myself seen it. If I say to the court that no, I have not seen it myself, it is someone who saw it and he told me, and therefore I am giving the testimony, that is not admissible. This is the principle of exclusion. So this is the principle of exclusion. But exclusion of what? You see that hearsay evidence means what? I have not seen it, I have not heard it, but someone else has seen or heard it and he has told that to me. Means सुनी सुनाई बात. होता है ना कि ऐसी कोई बात किसी और से सुनना, that is hearsay. And hearsay is opposite to direct. Direct evidence और hearsay evidence opposite phrases हैं. Hearsay में
आपने खुद परसीव नहीं किया है, किसी और ने परसीव किया है और आपको बताया है, तो आपका जो टेस्टिमनी होगा दैट इज हियरसे। और जिसने देखा था अगर वो खुद बयान दे देन दैट इज डायरेक्ट एविडेंस। So section 60 is basically laying down the principle of exclusion, and the principle is what? That the hearsay evidence is not admissible, inadmissible. The hearsay evidence is not admissible, inadmissible. So hearsay evidence is inadmissible, inadmissible. Read it again. Oral evidence must in all cases whatever be direct, whatever, civil or criminal. Oral evidence must in all cases whatever be direct, that is to say, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. If it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it. If it refers to a fact which would be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. If it refers to an opinion or to the grounds on which the opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds. मतलब आप किसी के ओपिनियन का एविडेंस ले रहे हो. Suppose you say what is the opinion about X. So the opinion should be taken from that person who has that opinion. अब suppose A is holding some opinion about X. A holds some opinion about X and A told his opinion to me. Then if I appear in the court and tells to the court that A is having so and so opinion about X, then that testimony given by me is not a direct evidence. But if A himself called into the court and he says that this is my opinion about X, then that is the direct evidence. Provided that the opinions of experts, read the proviso, provided that the opinions of experts expressed in any treatise commonly offered for state and the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as witnesses without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable. तो कई बार क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना ओपिनियन किताबों में लिखकर प्रिंट करा देते हैं, मीन्स अपनी बुक्स छपवा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं. फॉर एग्जांपल ये मोदी की एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस की किताब है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर. एनीवे, तो किसी भी एक्सपर्ट की कोई किताब है उसने लिखी अपने ओपिनियंस की, तो क्या हर ओपिनियन के लिए उस फिर एक्सपर्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करवाओगे आप? किताब लिखकर उसने गुनाह थोड़ी कर दिया. तो उन्होंने अगर वही ओपिनियन दिया है तो उसने उसको किसी बुक में लिख रखा है तो उस बुक को आप प्रेजेंट करा सकते हो, because it is his direct opinion and he has written it in the books, so you can produce it into the court. Now see next proviso. Provided also that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. Provided also that if oral evidence refers to existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. अब याद करो जैसे संतोष सिंह केस में वो हेलमेट वाला इंसिडेंट, द मार्क्स आर ऑन द हेलमेट. The court has the power to summon the production of that helmet and see itself, court itself see whether there is mark of upon the helmet or not, and if there, then what kind of it, whether वो उस तरीके के मार्क्स विक्टिम को पीटने से हो सकते हैं कि नहीं. तो उस तरीके का कोई अगर ऑब्जेक्ट है
तो कोड प्रोड्यूस कराकर अपना ओपिनियन बना सकता है। रीड इट अगेन। Provided also that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. So, when you talk about hearsay, the point is very clear that oral evidence should be direct. Therefore, any oral evidence which is indirect will not be admissible. And therefore, section 60 lays down the principle of exclusion of hearsay evidence. अब ये ध्यान रखना आप कि कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है। कार्डिनल प्रिंसिपल hearsay एविडेंस नहीं है। कार्डिनल प्रिंसिपल इज एक्सक्लूजन ऑफ hearsay एविडेंस। व्हेन यू से hearsay एविडेंस, व्हाट डू यू मीन? प्रीलिम्स के व्यू से देखिए, जब आप कहते हो hearsay एविडेंस, तो जब आप कहते हो hearsay एविडेंस, तो एविडेंस इसमें है नाउन, और hearsay क्या है इसमें? इट इज एन एडजेक्टिव। द वर्ड hearsay इज एन एडजेक्टिव एंड एविडेंस इज ए नाउन। तो ये जो शब्द हुआ ना, कैसा एविडेंस? दैट इज hearsay एविडेंस। क्योंकि कई बार पीटी में क्या करते हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्डिनल प्रिंसिपल? hearsay एविडेंस एक में ऑप्शन दे दिया, एक्सक्लूजन ऑफ hearsay एविडेंस सेकंड ऑप्शन दे दिया। तो hearsay तो एक शब्द है। What kind of evidence? Which you have heard from someone, and that is inadmissible. And therefore, the cardinal principle is the principle of inadmissibility or the principle of exclusion of hearsay evidence. It is the cardinal principle. So, write down: hearsay evidence is an evidence which is indirect, that is, the testimony of a witness who has not himself perceived the fact. The cardinal principle of law of evidence is the exclusion of hearsay evidence. Exclusion of hearsay evidence लिख लो, या फिर inadmissibility of hearsay evidence. Now the question arose, why should we not admit the hearsay evidence? hearsay evidence हमको क्यों एडमिट नहीं करना चाहिए? अब इसके आंसर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने किसी चीज को खुद देखा, एक फैक्ट को खुद देखा, परसीव्ड फ्रॉम हिज आई, एंड ही सेड टू बी। नाउ बी इज गिविंग द टेस्टिमनी। ए ने देखा मर्डर होते हुए, बी ने नहीं देखा। अब बी टेस्टिमनी देता है कि बी ने टेस्टिमनी देता है कि एक्स ने वाई को मारा। बी गिव्स द टेस्टिमनी दैट एक्स किल्ड वाई। अब इसमें पहला प्रॉब्लम तो ये है that B not himself seen, so B will not feel as responsible. Responsible means B से कुछ भी पूछो तो वो कहेगा मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी देखा, आपने फोन पे बुलाया था मैं आ गया, या सम्मन्स के थ्रू बुलाया था मैं आ गया। So there will be a lack of responsibility because he himself not seen it. Plus there are chances that B may concoct, manipulate, distort, कॉनकॉट कह लो, मैनिपुलेट कह लो, या डिस्टॉर्ट। बी में मैनिपुलेट द एंटायर स्टोरी बिकॉज बी ने खुद तो देखा नहीं है। अब ए ने खुद तो देखा नहीं, बी ने खुद नहीं देखा। ओनली ए टोल्ड बी दैट आई सो एक्स किलिंग वाई। अब बी में ऐड थिंग्स, ही में ऐड स्टोरीज, ही कैन नॉट टेल द रियल पिक्चर, ही में फैब्रिकेट और डिस्टॉर्ट द रियल पिक्चर। And since he himself not seen, he also not aware that I am distorting the facts. तो कई बार जाने अनजाने में भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ए ने बी को जो बताया तो बी उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, उसको पता भी नहीं कि मैं क्या डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बी नॉट फीलिंग रेस्पॉन्सिबल to tell the true story because he has not seen it. So the chances of distorting of that story because B himself not seen it, so the chance become, या फिर there are chances of distortion. And then most important, it is not possible effectively cross-examine.
It is not possible to effectively cross-examine the witness because he has himself not seen it. So whenever you cross-examine, he will say that I had not seen. So ask A. Why are you asking me? तो वो जो पॉइंट है कि क्योंकि उसने खुद तो देखा नहीं है, तो ना तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि मैं सच बयान करूं क्योंकि उसको सच पता ही नहीं है, जो ए ने बताया वही पता है उसको। और दूसरा, वो फैब्रिकेशन भी कर सकता है, वो नई स्टोरी भी ऐड कर सकता है। एंड नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी डन इफेक्टिवली। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू his effective cross examination. So these are the 3 reasons why the hearsay evidence is not admissible. These are 3 reasons why hearsay evidence is not admissible. So I am hoping that you are noting these points. अब देखा जाए तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है that concept of hearsay evidence is subjective concept. मतलब आप जो बयान दे रहे हो वो hearsay है कि नहीं, ये एक subjective concept है। अब कैसे, that we will see. Means the evidence which you are giving testimony, that is hearsay or not, that is a subjective concept. Now let's this with an example. Suppose in this example X shot and killed Y, and when X shot and killed Y, A was present on the spot. A saw X killing Y. B was standing outside the room, and room कह लो या house कह लो, B was standing outside the room and he heard the gunshot. B कमरे के अंदर नहीं था, तो he not see X killing Y, but he heard the gunshot. अब A come out and told B that X has killed Y. Then after A and B both run from the spot. दोनों डर की वजह से वहां से भाग गए, A and B both. Then on the way Z saw A and B were running. रास्ते में जेड ने देखा कि ए और बी भागते हुए जा रहे हैं, एंड जेड आस्क्ड बी that what has happened, and B told Z that X has shot Y. B told Z that X has shot Y, as A had said. उसने बोला कि A ने मुझे बताया है, B ने बोला कि A ने मुझे बताया है कि X ने Y को गोली मारी। अब इस एग्जाम्पल में ये फैक्ट्स हैं आपके सामने। पहला, X ने Y को गोली मारी, A was present on the spot, B ने बुलेट की आवाज़ सुनी, ब्लड शॉट की आवाज़ बी ने सुनी और उसने देखा नहीं। ए ने देखा और ए बाहर भागा और ए ने बी को बताया कि एक्स ने वाई को गोली मार दी। फिर दोनों वहाँ से भागे और उनको भागते हुए जेड ने देखा, और रास्ते में जेड ने बी से पूछा क्या हुआ, तो बी ने बताया कि मुझे ए ने बताया कि एक्स ने वाई को गोली मार दी। अब सपोज इन द ट्रायल द एविडेंस हैज टू बी गिवन एज टू who shot Y. In the trial, the evidence has to be given as who shot Y. अब इसके लिए A appears and gives the evidence, B also appears and gives the evidence, and Z also appears and gives the evidence. अब इसमें A ने खुद देखा तो then उसका एविडेंस टेस्टिमनी डायरेक्ट। अब B को A ने बताया तो उसका हियर से हो गया, और Z को B ने बताया तो उसका भी हियर से हो गया। सो जो टेस्टिमनी ए का है वो एडमिसिबल होगा, बट बी और जेड का टेस्टिमनी इज नॉट एडमिसिबल। अब मान लो इस सवाल को चेंज कर देते हैं, हु शॉट वाई की जगह ये सवाल आता है वेदर देयर इज ए गन शॉट।
अब इसमें ए भी बयान देता है, बी भी और जेड भी। अब ए का बयान हियर से होगा या डायरेक्ट होगा? ये डायरेक्ट होगा, क्योंकि अब बी बाहर था, सुना उसने भी था, तो इसका बयान भी डायरेक्ट होगा। बट बी को जेड ने बताया था कि मैंने गोली चलते हुए सुना है, गोली की आवाज सुनी है। तो जेड आके बयान देता है, तो उसका जो एविडेंस होगा दैट इज हियर से। सो डिपेंड करता है आप किस सवाल का बयान दे रहे हो। जैसे बी बयान देता है कि एक्स ने वाई को गोली मारी, अब उसने खुद ने तो देखा नहीं है, दैट इज हियर से फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन बी बयान देता है कि गोली की आवाज सुनी थी उसने, ही हर्ड द बुलेट शॉट, देन इट इज डायरेक्ट। अब मान लो इसी में बी बयान देने आया कोर्ट में फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन के लिए बी बयान देने आया, और कोर्ट में आकर बी बयान देता है कि ए हैड स्टेटेड immediately after the gunshot while he was running out that X shot Y। अब बताइए इस सिचुएशन में इट इज डायरेक्ट और हियर से। अब सेम ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, कि गोली चलने के तुरंत बाद एक कमरे से बाहर भागा और उसने कहा कि एक्स ने वाई को गोली मार दी, so that is said that the statement made in the same transaction, the statement made by A is in the same transaction, so that is the statement made by A in the same transaction। जैसे A had shouted that X killed Y, X shot Y, so did B hear, क्वेश्चन आएगा कि इस सिचुएशन में क्वेश्चन होगा कि डिड बी हियर ए स्टेटिंग दैट एक्स शॉट वाई, एक्स किल्ड वाई, एंड इन दिस सिचुएशन दैट इज ए डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सेम ट्रांजैक्शन। यहाँ पर बी ये बयान नहीं दे रहा कि एक्स ने वाई को गोली मारी, यहाँ पर बी ये बयान दे रहा है कि ए ने उसी ट्रांजैक्शन में कहा था कि एक्स ने वाई को गोली मारी। मान लो जब कोर्ट में ट्रायल चलेगी तो ए कोर्ट में बयान देता है एक्स ने वाई को गोली मारी, अब उसके ट्रुथफुलनेस पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स आ गए। अब फिर आप बी को कोर्ट में बुलाते हो बयान के लिए, तो उधर बी से आप पूछते हो कि तुमसे ए ने क्या कहा था, और ही सेज दैट कि ए ने कहा था कि एक्स ने वाई को गोली मारी। बी कोर्ट में आके कहता है कि ए ने कहा था कि एक्स ने वाई को गोली मारी, एंड दैट ही हैज सेड इन same transaction, that is a previous statement of A, but when you corroborate the statement made by A it will use। but यहाँ पर जब बात करेंगे कि B said that in the same transaction A had stated that X shot Y, तो यहाँ पर B किस फैक्ट का एविडेंस दे रहा है? He is not giving the evidence that who shot Y, his evidence is about what did A said at that time। So the fact here is not that who shot Y, the fact here is what did A state in the same transaction। अब did you not hearing A what he has stated in the same transaction? Did not B hear the statement of A when he was running in the same transaction? Answer is yes। मतलब अगर बी कोर्ट में खड़े होकर इस बात का बयान दे एक्स ने वाई को गोली मारी, देन दैट इज हियर से। और अगर बी कोर्ट में खड़े होकर ये बयान दे कि मैंने गोली की आवाज सुनी थी, देन इट इज डायरेक्ट एविडेंस। अब अगर बी कोर्ट में खड़े होकर ये बयान दे कि मैंने गोली की आवाज सुनी थी और उसके तुरंत बाद ए भागकर बाहर आया और उसने मुझे कहा कि एक्स ने वाई को गोली मारी, अब हियर व्हाट ही इज गिविंग एविडेंस ऑफ द फैक्ट कि वो तुरंत भागा, गोली चलने के बाद तुरंत भागकर बाहर आया, और उसके बोलने के उसने क्या बोला, वो इस बात का बयान नहीं दे रहा कि एक्स ने वाई को गोली मारी। ही इज गिविंग ऑफ द एविडेंस दैट ए हैड सेड दैट एक्स ने वाई को गोली मारी और वो तुरंत भागकर आया था गोली चलने के बाद। So here that situation is called the same transaction। So here when B giving the evidence of the statement of A of that situation, that is
a direct evidence. What situation? The situation of same transaction. अब मान लो कोर्ट में Z खड़े होकर बयान दे A and B running away from the spot. अब ये बयान जो इसका एविडेंस होगा टेस्टिमनी, दैट इज हियरसे और नॉट. तो इसमें हमको एनालाइज करना पड़ेगा ऑफ व्हाट फैक्ट ही इज गिविंग टेस्टिमनी. Here he is giving, Z is giving the testimony of the fact whether A and B was running in the same transaction. So the Z is giving the testimony of that fact and Z has seen it direct. So that evidence is also a direct evidence. और अगर मान लो Z कोर्ट में खड़े होकर कहता है X ने Y को गोली मारी, इसकी टेस्टिमनी देता है, then in that situation it is hearsay evidence, क्योंकि उसने खुद तो नहीं देखा. Who told him? B told him. B told him that A has told B कि X has killed Y, and since the Z has heard it from someone else, so killing of Y by X, that is hearsay. But A and B running from the spot, that was seen directly by Z, that is what? Direct evidence. So here the point is कि आप कोर्ट में खड़े होकर क्या बयान दे रहे हो और किस चीज के लिए बयान दे रहे हो. Because when you appeared in a court as a witness, you give the statement regarding a fact. अब X killed Y is one fact. A stated that X killed Y is another fact. A ran out of the house or room just after the gunshot is a fact. या फिर A ran out of the house just after the gunshot and stated X killed Y is another fact, second fact. Then A and B together running from the spot at a particular time, that is a third fact. If Z comes into the court and say that X killed Y, क्योंकि Z ने खुद नहीं देखा था, then it will not be admissible. It is hearsay evidence. अब Z कोर्ट में खड़े होकर बयान दे कि A ने B को कहा था कल कि X ने Y का मर्डर कर दिया. अब इस एग्जाम्पल में भी A को बोलते हुए नहीं सुना था Z ने, तो इस फैक्ट के लिए भी हियरसे एविडेंस होगा. अब Z ने बयान दिया कि A और B को मैंने भागते हुए देखा. सो फॉर दिस फैक्ट, सिंस ही इज परसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम हिज सेंसेस, इट इज अ डायरेक्ट एविडेंस. अब suppose A gives testimony X killed Y, then it is a direct evidence. Now A gives the testimony into the court that I told B that X killed Y, that is also a direct evidence. Then A gives the testimony that me and B running from the spot, that is also a direct. Now suppose B gives the testimony that X killed Y, it is hearsay evidence, क्योंकि B ने तो देखा नहीं. अब B gives the testimony after the gunshot, I saw A running out of the room, then that is a direct. Then B gives the testimony that while he is running out of the room, A is running out of the room, he shouted that X killed Y, that is also a direct. क्योंकि यहाँ पे ये बयान नहीं दे रहा किसने मारा, यहाँ पे ये बयान दे रहा है कि A ने मुझे क्या बताया, therefore it is direct. अब मान लो उसने भागते हुए भी नहीं देखा, वो कहीं और था. भी गन शॉट हुआ, उसके बाद उसने तुरंत A को देखा और उसके बाद A आया और A को चिल्लाते हुए देखा X ने Y को मार दिया, तब भी डायरेक्ट है इस फैक्ट के लिए कि A ने ये बोला या चिल्लाया कि X ने Y को मार दिया. तो यहाँ पर B ये बयान नहीं दे रहा कि X ने Y को मारा, यहाँ पे ये बयान दे रहा है कि A ने उस टाइम क्या बोला या फिर मुझसे क्या कहा. उसी तरीके से Z का ये बयान कि A और B वाज रनिंग टुगेदर, दैट इज अ डायरेक्ट एविडेंस. जैसे अब गन शॉट की अगर बात करें, वेदर देयर इज अ गन शॉट, तो Z ने नहीं सुना, देन इट इज ए इनएडमिसिबल हियरसे एविडेंस. अगर Z बयान देता कोर्ट में आके, B ने सुना, देन इट इज डायरेक्ट एविडेंस. A ने देखा और सुना, देन इट इज डायरेक्ट एविडेंस. सो द कंक्लूजन इज, जो भी एविडेंस आप जिस फैक्ट पे एविडेंस दे रहे हो,
जिस फैक्ट को पे आप एविडेंस दे रहे हो उस बात को, उस फैक्ट को आपने खुद सुना था, देखा था या परसीव्ड फ्रॉम अदर सेंसेस, तो वो एविडेंस डायरेक्ट होगा। लेकिन उस फैक्ट पे जो आप एविडेंस दे रहे हो वो आपने किसी और से सुना था, तो फिर वो hearsay एविडेंस होगा। So hope you understood this topic by this example, and that's it for this lecture. We would continue this topic into the next lecture. Thank you for watching lecture.